so that we can also get responses from others. This is a sense of historicity that is going to help us understand that entire other society about which we know nothing. We consume their products, and I am saying I am othering them because मानना पड़ेगा. जितना भी we can have a lot of sympathy for them, we can have a lot of sympathy for the politics that represents them, but we do it in complete ignorance of the systems and the concepts and the values that they hold dear to them. We judge those values in a theoretical space. कि ऐसा क्या कि देना ही पड़ेगा अभी, ये क्या है, ये हम बता सकते हैं from where we stand because we are very powerful people. But that historicity is very important for us. और वो अभी चला ही जा रहा है. We are not saying कि उसको वापस लाना है कहीं, ये मुमकिन है नहीं है, ये सब पता नहीं है. We don't know how it's going to happen. But if you want to understand where arts, crafts and its form and methodologies and that value system within which it has come to us, that same arts and crafts that we are rooting for, ये history के बिना ये कैसे हो सकता? The other thing is, and this is an attempt that we should all probably start making, is to put ourselves within that history. हम बाहर खड़े होकर टिप्पणी नहीं कर सकते. This luxury is not available to us anymore. अगर नहीं करना है तो जुड़ना नहीं. अगर जुड़ना है तो we have to find our own ways in which to find our location in this system. अब शोषण की बात कर रहे हैं तो हम क्या शोषण कम कर रहे हैं? अपने लैंग्वेज से शोषण हो. तो देन हाउ डू वी रेस्ट्रेन आवर लैंग्वेज? अब उनका लैंग्वेज हम सीख सकते हैं जिस हद तक, जहाँ पे जुड़ सकते हैं वहाँ जुड़ना है. तो आई थिंक वी शुड, द पॉइंट इज आई एम नॉट सेइंग वी शुड इन अ वेरी नॉर्मेटिव सेंस कि आप बाहर जाओ चलो लग जाओ, बट आई एम सेइंग दिस इज अ थिंग दैट आई हैव आल्सो ट्राइड. क्योंकि मैं तो आई born and brought up in a city and I'm no less urban than any of you here. But this is one path I have found in which, this is a way in which I can have a conversation with an artisan wherein I could seek something. Otherwise I'm going to a village or an artisanal community and asking them कि आपकी समस्या क्या है ना? आज वही तो रहा है, आज डेवलपमेंट टूरिज्म चल रहा है. समस्या क्या है? आपकी समस्याएं क्या है? आप प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ? मतलब जल्दी से वो इकट्ठा करके रिपोर्ट लिख के भेज देना है. मतलब आप कौन हो? What is your value system? How are you producing this? What are your methodologies? Where does it come from? How do you archive it? How do you remember it? What do you aspire for? What do you aspire for? ये तो कोई नहीं पूछता. हम सब प्रोजेक्ट मोड में रहते हैं. सीधा मतलब SUV लेके अंदर जाते हैं. बट ये उतने टाइम में नहीं होगा, इसके लिए समय की जरूरत है. तो we probably then can reimagine the way in which we can design our time in such a way that we allow for a long conversation to happen, है ना? And also conversations which are not filled with ideas that come from us, that are not filled with words that come from us. But Sushruti, that's Yes. what we've been doing, right? I mean, you spoke about what are their aspirations, right, of the artists or the artisans. So, did we put those questions to Little louder, please. He's asking, did we put those sorry. questions to the Langa community when they Langa were here community. yesterday? Yeah. Or to Kailash ji? तो इनकी तो आवाज सुनाई नहीं दी ना. पहली बार इनकी आवाज कल सुनाई दी, क्योंकि भाषा तो कल शुरू हुई थी. For only about an hour हम ऐसे एक भाषा में, ऐसे एक नैरेटिव में बोले जहाँ पे लांगा और कैलाश जी जुड़ पाए. तब तक तो हम हिंदी में बोल रहे थे पर अंग्रेजी ही तो बोल रहे थे. तो पहली बार कैलाश जी का आवाज सुन के बहुत अच्छा लगा.